Hi dear students, let's see this question that came in JEE Advance Paper-1 Physics in the year 2021. The question is from the topic of fluids. The question is simple based on the concept of effective gravity. This is based on the marking scheme of MCQ type, that means multiple choice correct question. Those students who have done the questions based on the accelerated containers, they would have been able to do this question. I will tell you one very good crisp short solution of this question. So what's happening over here, there's a fixed inclined plane, and on this inclined plane there's a cylinder whose bottom surface is according to that of inclined plane itself. So this cylinder is sliding with an acceleration value of a. So we choose 2 points, P1 which is right at the bottom and P2 which is here. Really sorry. So this pressure difference divided by rho GD has been defined beta. So beta is P1 minus P2 divided by rho GD. D is the diameter of the cylindrical tube, which is this distance. Rho is the density and G is the acceleration due to gravity. Theta is 45 inclination angle. So we have to find the value of beta when acceleration is G by root 2, which is the acceleration of this cylinder along the plane. And we have to find the value of beta when acceleration is G by 2. Okay. Now, before solving to this question, let's see one very simple concept. Okay. I will ask you a very simple question. In our world, or that means we can say that in the Earth's frame, if acceleration due to gravity is G, then what is the pressure difference between these 2 points? Let's say this point is 1 and this point is 2, and they are separated by a height of h. So we know that this result is P2 minus P1 equals to h rho G. All of you know this. It's a very simple basic result. So the pressure difference is h rho G, where h is the distance through which we travel in the direction of gravity. That means if we move in the direction of gravity, pressure will increase. If we move opposite to gravity, pressure will decrease. Okay, it's a very simple result. Okay, that's all we need to solve this question. Trust me. Now let's get back to this. When acceleration is g by root 2, so 1 is actual gravity, this is actual gravity, and 1 will be pseudo gravity, which is g by root 2 in the opposite direction, since it's a pseudo gravity. Or you can also say that we are solving the question with respect to this red man who is standing on this cylinder. So for this red man, one gravity will be that usual gravity which Earth will exert, plus one will be pseudo gravity because of the acceleration factor. So this will be g by root 2. Now, why am I writing g by root 2? Because first I am taking option A and B. In option A and B, acceleration is g by root 2. So if you resolve, so this is the effective gravity. Okay, now effective gravity will be the vector sum of these two gravities, right? जो effective gravity आएगी वो इन दोनों का vector sum आएगी. इस g को रिजॉल्व कर सकते हैं, ये जो gravity downward direction में इसको रिजॉल्व कर दिया, तो ये जो फिगर बनेगा this will look like this. ये g by root 2 ऐसा आया, इस g को रिजॉल्व करके हमने g by root 2 ऐसे लिख दिया and g by root 2 ऐसे लिख दिया. Correct? So these two vectors will cancel out, and hence we can say that effectively gravity is in the direction of g by root 2 at an angle of 45 degree. You can see. Now with respect to this man, we can say that in the word of this man, इस बंदे की दुनिया में gravity की direction g by root 2 ऐसे है. That's it. That means these will be the isobaric lines. That means isobaric lines ऐसी होंगी. Any इस पे प्रेशर जीरो, मतलब इसमें इन लाइंस पे प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा. जैसे इन आवर वर्ड, इफ वी मूव परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी देयर इज नो प्रेशर चेंज. तो इस बंदे की दुनिया में ग्रेविटी की डायरेक्शन ये हो गई है, तो ऐसे प्रेशर का कोई चेंज होगा ही नहीं, राइट? 45 डिग्री पे. नाउ यू कैन सी 1 and 2 बोथ आर द पॉइंट्स टेकन ऑन द 45 डिग्री. सो प्रेशर 1 माइनस प्रेशर 2 विल बी 0. ये दोनों जो मतलब ये आइसोबेरिक लाइंस पे पड़ जाएंगे, एंड हेंस ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? Same logic we are going to apply for option 2, sorry option C and D. Option C and D में acceleration की value g by 2 है. Okay, so एक तो ये actual gravity हो गया, ठीक है,
और एक ग्रेविटी कितना है, स्यूडो ग्रेविटी g/2 है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक। तो इफ वी resolve this, so we can say that gravity in the vertical direction will be, मतलब gravity in the vertical direction, ठीक है, मतलब vertical direction में g minus g/2 sin 45, correct, this is effective gravity in the vertical direction, ठीक है, and gravity in the horizontal direction will be g/2 cos 45, that means g/2 into 1/√2, ये इस डायरेक्शन में ग्रेविटी आएगा, ठीक है। तो वी कैन से दैट ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस gv and gravity in the horizontal direction is this gh. So basically in the word, so if I draw the figure over here, ठीक है, तो उस रेड मैन के फ्रेम में, if we talk about this red man, तो रेड मैन के फ्रेम में ग्रेविटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज दिस g minus g/2√2 और ग्रेविटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज दिस g/2√2। बस अगर हम ग्रेविटी के अपोजिट जाएंगे तो प्रेशर विल डिक्रीज, और ग्रेविटी की डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रेशर विल इंक्रीज, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये डिस्टेंस d दिया गया था, ये एंगल 45 है, तो ये d है तो फिर ये भी d होगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज 1, ये पॉइंट 1 है, तो 1 से पहले अपन c पे जाते हैं, ठीक है, और फिर c से 2 पे जाएंगे, तो P1 से अपन c पे गए तो प्रेशर विल डिक्रीज बिकॉज वी आर गोइंग अपोजिट टू ग्रेविटी, ग्रेविटी वर्टिकल में ऐसी है, ठीक है। तो प्रेशर 1 माइनस कितनी है ग्रेविटी, g माइनस g/2√2, ठीक है, इनटू ये डिस्टेंस विच इज d इनटू डेंसिटी विच इज रो, रो है कि क्या दिया गया डेंसिटी या रो, ठीक है। तो दिस इज द प्रेशर एट सी। नाउ वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी की वैल्यू gh है, ठीक है, जो कि इस तरफ है, तो प्रेशर विल इंक्रीज विच विल बी g/2√2 इंटू d इंटू रो, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी P2, इसकी वैल्यू हो जाएगी P2, दैट्स इट, क्वेश्चन डन। तो यहां से अब अपन P1 माइनस P2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इफ यू सी P1 माइनस P2 कितना आया, P1 माइनस P2 बाई रो GD, तो रो GD भी कर देते हैं इस तरफ, बाई रो GD विल बी इक्वल्स टू कितना आएगा, 1 माइनस 1/2√2, ठीक है, इनफैक्ट ये हो जाएगा -1 प्लस 1/2√2 एंड प्लस 1/2√2, तो फिर राइट साइड पे जाके उल्टा हो जाएगा, राइट, तो कि 1 माइनस 1/2√2 एंड 1/2√2 यानी कि 1/√2, ये आया। So this becomes √2 minus 1/√2. This will be the answer, and hence we can say that option C will be the correct answer, which makes option D wrong and option B also wrong. So I hope you would have understood. We could do this question by various other methods, but I believe कि effective gravity is a very nice method. That's it. Thank you.